o'clock. You continue to be with us here at CNN News 18. I am Ridhima Bhatnagar. Straight to our top focus. A big win for the Hindu side as the right to pray plea has been admitted by the Varanasi court in the Gyanvapi Mosque case. In a big jolt to the Muslim side, the court said that the plea filed by the 5 Hindu women seeking the right to worship in the mosque will be heard and the case is maintainable. Pronouncing the verdict, the court said Places of Worship Act is not a hurdle in this case. Remember, this had been the main argument made by the Muslim side. Now we are understanding the next hearing is scheduled for the 22nd of September. Meanwhile, the verdict hasn't gone down well with the Muslim side and they've already said that they will move to the Supreme Court now. Before 22nd of September, what is going to be your legal counsel to the Hindu side? Now the question is that several applications are pending and we will also see that the further excavation or GPR survey takes place and not only that, there will be required carbon dating also. So we will proceed for that also. That our application will be filed on the next date. The only issue was whether the suit is barred by place of worship or not. That was the only question. And secondly, we have taken, they should be sent to above tribunal for decision. Court has rejected both the grounds and so raised by Muslims, and court has said no. Place of worship act is not applicable in this case because up to 1993, according to plaintiff, the Hindu puja was going on. And during Mulayam Singh government, the Hindus were dispersed from the place, from the mandir premises, and thereafter only one day in the year they were allowed. Therefore, puja was going on, and it can't be said that place of worship act is applicable. A suit is barred by place of worship act. Right. Actually, the Muslim side all over India had created a havoc that the place of worship act is applicable, but court found no, it is not applicable in this case. सबसे पहला आप वादी थे, आप ही ने सबसे पहले फोटोग्राफ लिया था, आप ही का फोटोग्राफ जमा हुआ है यहाँ कोर्ट पर, जिसके बाद कमिश्नर ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया गया था। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले सर्वे के दौरान हमने कहा था कि बाबा मिल गए और आज इस विजय की घड़ी में पुनः कह रहे हैं कि यह विजय का जो है काशी विश्वनाथ के शिलान्यास का यह बीजारोपण का बीज साबित होगा। आज का विजय उत्सव, विजय का फैसला। आज प्रकृति भी खुश है, आज हमारे शिव भी हमारे साथ है। फुहारा नहीं है, अगर फुहारा होता तो इसके नीचे क्या है बताए वो हमको, उनके पास कोई सच्चाई नहीं थी। Let me also now bring in my colleagues who've been tracking all these developments for us. Pranshu Mishra, he's been tracking all these developments from Varanasi, joining us on the broadcast from outside the court. And my colleague Ananya Bhatnagar, who's been tracking all the developments as far as the legal side is concerned. Pranshu, coming to you first. The Hindu side is saying this is a win in the right direction, while a disappointed Muslim side is saying they will approach a higher court. Just summarize for our viewers what we heard from the court today. Yes, that's right. See, I think the Hindu side is, is justified in saying that this particular day, today's verdict, is a win in their direction, or is an indicator of things going their way. Now, the reason being because the Muslim petition was basically asking that the Hindu petition of the 5 women devotees seeking the right of daily worship at the Ma Shringar Gauri's scriptures on the wall of the mosque, that should be allowed, and that has been, the petition of the Hindu side that has been held up by the court today. Therefore, the Muslim side is a bit disappointed. It says that the court's interpretation, the court's logic today, that is not appropriate as per the points laid in the Act of 1991, and therefore they will approach the higher court. The Hindu side is elated because now it feels that the larger battle about determining the actual character of this place, the larger battle over debating about the findings of the Advocates Commissioner survey report, the larger argument over deciding that whether the place that has been sealed, which the Muslim side calls it as the Wazukhana and the Hindu side calls it as a sacred shivling, all those arguments can now take place further in the court, and that's the reason why the district court has fixed the date of 22nd of September, called in all the sides to decide on what future date
which particular petition should be taken up. But the sense we are also getting is that during this course, over the period of probably next 1 week, we might be seeing the Muslim side approaching the High Court or else even the Supreme Court, where the matter is already, still before the consideration of the Supreme Court, challenging the today's order of the District Judge Court. Very important point which the District Judge in its order clearly said that the 1991 Act doesn't bar up a petition seeking the right to worship. It might be barring a suit which claims to determine the exact religious nature of a place, but this particular petition, the Sringar Gauri petition, was not about determining the religious character of the place. It was about the right of worship filed by a set of devotees, and therefore the court said that it feels that this petition should be kept under consideration. It is fit for further hearing, and therefore the stage has been set. Over the next few days, in the days to come, we'll see arguments and counter arguments between the Muslim and the Hindu side over each and every finding of the Advocate Commissioner's survey report. Correct. And Pranjal, this is something that you pointed out earlier, that today is going to be only about the maintainability of the plea, and after that also there will be a long drawn battle. But let me bring in our colleague Ananya in the conversation as well. Ananya, with this plea now being accepted or admitted in the court, does that then mean that the big takeaway is that the Places of Worship Act does not have any bearing, or the case is not barred with the Places of Worship Act, which had been one of the biggest arguments from the Muslim side? Well, definitely, Ridhima, as I was pointing it out earlier as well when we were discussing this particular case, and since the very morning while we were discussing this whole petition, we had said that in fact Justice Chandrachud also, while he was hearing these petitions in the Gyanvapi row earlier, had said that there is no bar section under Section 3 of the Places of Worship Act, which says that no redetermination of a religious characteristic of a place can take place, cannot take place. And in fact, Section 4.2 also does not have a bar per se with regards to the redetermination of religious characteristic of a place of worship. And now the orders of the Varanasi court are clearly out, saying that it is just a prayer for seeking a right to interrupting worship. Dinesh Sharma, also now joining us on the broadcast. Good to have you on the broadcast with us. How do you see what has transpired in the court today? देखिए, माननीय न्यायालय के निर्णय का सम्मान करना सभी का कर्तव्य है, और माननीय न्यायालय निश्चित रूप में जो विधिक प्रक्रियाएं होती हैं और जो प्रदत्त उनको अधिकार होते हैं उनका प्रयोग करता है, और गुण दोष के आधार पर जो भारत का संविधान कहता है उसके अनुसार वो निर्णय लेता है। इसलिए जो भी न्यायालय का निर्णय है वो स्वागत योग्य है और सभी पक्षों को इसको मानना चाहिए। अभी तो ये काफी आगे की लड़ाई है, काफी आगे इसकी सुनवाई बाकी है, और मैं कहूंगा कि सभी पक्ष बिल्कुल शांतिपूर्वक ढंग से, माननीय न्यायालय कभी भी अनिश्चित निर्णय नहीं लिया करता। यही भारतीय जो न्याय व्यवस्था है उसकी विशेषता पूरी दुनिया में है, और सभी जगह लोग भारत की न्याय व्यवस्था की तारीफ करते हैं, और मैं समझता हूँ कि भी काफी विकल्प सभी के पास में मौजूद हैं, लेकिन विद्युत न्यायालय का आदेश जो भी आता है अभी तो हम जब तक उसमें कोर्ट ने जो कहा है अब उसको हम भी पढ़ लेंगे, तो उसका हम लोग राय करेंगे। राय करने के बाद हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में वहाँ वकील से मशवरा करेंगे, इस पॉइंट को हम लोग वहाँ हाई कोर्ट में रखेंगे। और ये जो मामला भी सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग को खत्म तो नहीं किया था, उसने यहाँ पे जिला जज के द्वारा ट्रांसफर किया था। सुप्रीम कोर्ट और जिला जज जाने, जिला जज सुप्रीम कोर्ट ने जिला जज को डायरेक्शन दिया, उनके डायरेक्शन के मुताबिक जिला जज ने हम दोनों पक्षों की बात सुनी, बात सुनने के बाद एक ऑर्डर किया। अब इसकी रिपोर्ट वो वहाँ भेजेंगे सुप्रीम कोर्ट। तात्कालिक जो पहला ऑब्जर्वेशन आपका है कि क्यों ये ऑर्डर सही नहीं है? हमारा ऑर्डर सही नहीं कि जब तब तक ऑर्डर नहीं पढ़ लेंगे तब तो हम कैसे बता दें कि क्या कमी रह गई, और कोर्ट ने उस कमी को कहाँ छोड़ दिया, कहाँ और लुक कर दिया। नहीं, आपके जो आर्गुमेंट्स थे कि ये जो पिटीशन है ये मेंटेनेबल नहीं है 1991 एक्ट के तहत, तो उसको कोर्ट ने ये कहते हुए मना किया कि ये रिलीजियस कैरेक्टर को डिटरमाइन करने के लिए है ही नहीं, ये तो पूजा के अधिकार को लेकर के याचिका थी। पूजा के अधिकार, ठीक है, पूजा का अधिकार तो आपका कभी हुआ ही नहीं। आप कहते हैं कि बराबर 93 तक होता रहा, 93 में भी नहीं था, साल में एक बार होता था पूजा, वो आज भी हो रहा है। एक बार साल में होता था चैत में, वो आज भी हो रहा है। तो आप जो कोर्ट हायर कोर्ट में जाने की बात कर रहे हैं वो 22 सितंबर के पहले ही जाएंगे, जबकि यहाँ पे जिला कापी मिलने के बाद ही ना जाएंगे जी। कापी मिल जाएगी तो जाएंगे।
कॉपी मिलने के बाद आप जाएंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया। So that is was Mirazuddin Siddiqui, who is the advocate for the Muslim side, and he clearly is not satisfied, and he clearly confirming that the Muslim side would be approaching to the High Court, challenging today's orders by the District Judge Court of Varanasi. The former Deputy Chief Minister of Uttar Pradesh, Dinesh Sharma, continues to be with us. दिनेश जी, आप जैसे बता रहे थे कि आप कह रहे हैं दोनों पक्षों को जो कोर्ट का ऑर्डर है उसको मानना चाहिए, पर जैसे अभी मेरे कॉलीग मुस्लिम लॉयर जो मुस्लिम साइड को रिप्रेजेंट कर रहे थे उनसे बात कर रहे थे, वो तो कह रहे हैं कि हम अब टॉप कोर्ट के पास जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। नहीं, देखिए, न्यायालय में जाने का अधिकार सबके पास सुरक्षित है और इसको कोई मना नहीं कर सकता है। उनका अधिकार है, वो ऊपर जाए, हाई कोर्ट में जाए, वो सुप्रीम कोर्ट में जाए, ये उनका अधिकार है। लेकिन मैं विद्युत न्यायाधीश ने जो आज निर्णय दिया है, मैं इतना ही कहूँगी कि स्वागत योग्य है। उन्होंने वृहत परीक्षण करने के बाद परिस्थितियों का आकलन करते हुए और सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व में दिया गया निर्णय है पूजा के संदर्भ में, मंदिरों के संदर्भ में या धर्म स्थलों के संदर्भ में, उसको देखते हुए दिया है और उसका उल्लेख किया है। तो इसलिए उस पर अनावश्यक किसी प्रकार की टिप्पणी मैं समझता हूँ कि उचित नहीं होगा। हाँ, जिसके पास अगर विकल्प है, वो जाना चाहते हैं तो वो जाएंगे और निश्चित रूप में न्यायालय उनको भी सुनेगा और जो दूसरा पक्ष है जो पूजा के लिए चाहता है, न्यायालय उसको भी सुनना है। जी दिनेश जी, आज की याचिका थी वो थी कि माँ श्रृंगार गौरी के जो दर्शन है वो साल में एक बार नहीं रोज होने चाहिए। कितनी जरूरत है या कितना महत्व रखता है ये रोज की पूजा होना? तो हर चीज क्या है, ईश्वर की स्तुति, इससे महत्वपूर्ण कार्य कौन हो सकता है। और मैं समझता हूँ कि जो भी याचिकाकर्ता है उन्होंने आपके प्रश्न का उत्तर अपनी याचिका में निश्चित रूप में दिया होगा और ये लोगों की धार्मिक भावनाएं हैं, उन धार्मिक भावनाओं के बारे में बगैर न्यायालय के किसी निर्णय के कोई टिप्पणी उचित नहीं है। हाँ, ये सबको, यही धर्मनिरपेक्ष राज्य की विशेषता है कि सबको अपने अपने धर्मों का पालन करने का अधिकार है और जो चीज विवाद के घेरे में रही हो और जिससे लोगों की आस्था जुड़ी हो तो उसकी आस्था का भी सम्मान एक जरूरी हो जाता है। लेकिन इस सरकार में सभी जाति और धर्म का सम्मान है, किसी के साथ जोर और जबरदस्ती नहीं है। सभी पक्षों से मेरा इतना ही कहना है कि न्यायालय पर विश्वास रखें और न्यायालय के दायरे में ही जो बातें आती हैं उन पे अपना पक्ष प्रस्तुत करें। जी दिनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। वी आर आल्सो गेटिंग सम अदर रिएक्शंस कमिंग इन, लेट्स लिसन इन। कोई फैसला है, हम सबको उसका सम्मान करना चाहिए। चलिए, ऐसा नहीं लग रहा है कि मुस्लिम पक्ष के फैसले को सुनना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए? न्यायपालिका सभी पक्षों को सुनता है, सभी तथ्यों को सुनता है और सबके पास जो है सबकी बातों को सुन के किसी फैसले पे आता है। हम सबको न्यायपालिका के फैसले का सम्मान करना चाहिए। वीडियो बना लीजिए। Okay, multiple reactions continue to come in. I want to continue the conversation with my colleagues. Pranshu and Ananya continue to be with us. Pranshu, now I want to talk to you about what do we expect from here on, because today the entire matter was about the maintainability of the plea, which essentially started when 5 Hindu women who wanted the right to pray at Maa Shringar Gauni on a day-to-day basis. What happens from here on? As far as the character of the structure is concerned, what can we expect in the days to come? Okay, we'll try and re-establish that connection with my colleague Pranshu. But Ananya, let me take that question to you. As we said, this was not the end of the legal tussle. In fact, in many ways, it's the beginning of what we'll see in days to come or weeks to come. We're already hearing from the Muslim side. They're disappointed. They're saying they'll approach the top court. First, let's talk about that. What are the legal options available with the Muslim side? Well, the only option available with the Muslim side is to approach the Allahabad High Court challenging these particular orders. Also, they can mention it before the Supreme Court of India because the matter is already pending before the topmost court of the country, and already a hearing in this particular case is slated before the topmost court of the country in October second week. In fact, the Supreme Court bench headed by Justice D.Y. Chanchur had in fact slated the matter for hearing in October, but before that on September 22,
the case would be drawing. In fact, the judge has said that written submissions have to be filed by both of these sides in order to frame issues which are to be dealt with in the detailed hearing that would take place. And as you rightly mentioned, it is not the end but the beginning of the legal saga between the Hindu and the Muslim side. In fact, it is actually the clear beginning, because this is the stage on which the Advocate Commissioner's report would come in, the evidences would come in particularly. And also remember that the Hindu side has been citing a lot from the Puranas, whether it's the Skand Puran, whether it's the Shiv Puran, whether it's the Vishnu Puran as well. They've been citing various excerpts from all these ritual books. Apart from that, they had cited, in fact, not only in the Varanasi court but also in the Supreme Court, the orders of the British Imperial Times, that is the British courts, with regards to this particular land wherein it was clearly held. And this area was mentioned too as a temple. And as we heard Mr. Jain also speaking, that until 1993, that even after the 1947, the bar of the POW Act, there were prayers going on into that particular temple. And as the Hindu side and Mr. Jain argues that the alteration has been done on the part of the Muslim side. This would be the premise of the Hindu side's argument, while the Muslim side would continuously be arguing that a redetermination of a religious character cannot take place. But what is not being talked about, Ridhima, is a very, very particular part of this order, wherein a failure has been drawn on the part of the Kashi Vishwanath board of not appointing and particularly protecting the worship right at this particular place. And hence this is something that is a very, very important aspect that has been highlighted by the court of law. In fact, it has also been held by the court that the argument of the Muslim side that this so is as Ananya is pointing out that, you know, there is still a legal saga that is expected, because today what we've seen is only the maintainability of the plea by the Hindu side being admitted. Already, as I pointed out, the Muslim side is saying they'll approach the top court. Before I bring in my guests, some reactions coming in. इबादत गाह जो बनी हुई है उसका मेंटेनेंस नहीं किया जाएगा, ये समझौते में तय हुआ था। और जब वो स्वाभाविक शरण होकर के जमींदोज हो जाएगी तो फिर वो भूमि हिंदुओं को मिल जाएगी, लेकिन उसका पालन नहीं हुआ और उसी का परिणाम निकला कि मथुरा भी अभी एक प्रश्न के तरह खड़ा हुआ है। मेरी इच्छा है कि मथुरा का मामला भी अगर न्यायालय में जावे तो सब लोग शांति के साथ उस सारे पक्षों को सुने और उनको स्वीकार करें। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस बीच का जो घटनाक्रम हुआ है, काशी कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद का जो घटनाक्रम पूरे देश में हुआ, तो दुखद उसमें बदल गया था। जबकि इसके पहले इतने कार्यक्रम हो गए और उसमें उन्होंने जो सम्मानजनक तरीके से सबने उस फैसले को सुना, आगे भी यही वातावरण बना रहे और एक दूसरे के धर्म के प्रति संवेदनशीलता का ध्यान रहे। कौन अपने धर्म के प्रति कितना संवेदनशील है और वो कौन सी बातें हैं जिनको छेड़ देने से दिक्कत खड़ी होती है, इसमें बहुत सतर्कता बरतनी पड़ेगी। अभी मुस्लिम कट्टरपंथी समाज मुसलमानों पर हावी है, लेकिन एक उदारवादी समाज का इमरजेंस हो रहा है और उस उदारवादी समाज का इमरजेंस होने में उन्हें समय लगेगा, क्योंकि भारत में हिंदू बहुत पुराना धर्म है। इनमें उदारवादी समाज निरंतर चला है। शास्त्रों में भी जो 6 शास्त्र हैं उसमें एक चारवाक का भी दर्शन है, यानी जो भगवान को नहीं मानता, हमने उसको भी 6 फिलॉसफीज़ में शामिल किया हुआ है। और इसलिए अभी उस तरह की अपेक्षा हमें मुस्लिम समाज से नहीं कर पानी। अभी हम इतनी अपेक्षा करें कि जो न्यायालय के फैसले हों वो उनको स्वीकार करें, जो सबूत हों वो उनको स्वीकार करें, जो अभी तक होता रहा है। इस मामले में भी आप मेरी खुशी की तो कल्पना ही नहीं कर सकते, क्योंकि मध्य प्रदेश की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने वहाँ मंदिर का निर्माण कराया, लेकिन नंदी जी वहीं रह गए। और अहिल्याबाई होलकर जी अगर चाहती तो उस समय नंदी जी का मुंह घुमा के इधर कर देती, लेकिन वो जानबूझ के नंदी जी, आपको मैं बताऊँ, मैं जब वाराणसी गई, मैं अभी पूरे 1 महीने वाराणसी में थी, कार्तिक पूर्णिमा से दत्त पूर्णिमा तक 2021 में। तो मैं उस नंदी के गले में झूल के उसको कान में यही बोलती थी कि दद्दू इधर कब तक देखोगे, कोई रास्ता तो निकाल दो। मैं उनको बड़ा भाई कहती हूँ नंदी जी को। मुझे लगता है दद्दू ने रास्ता निकाल दिया। भगवान जल्दी अवसर देगा तो मैं वाराणसी जाऊंगी, लेकिन मैं किसी उत्तेजना को भड़काना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि एकजुटता के साथ ज्ञानवापी का फैसला हो जाए, एकजुटता और सम्मान के साथ ही मथुरा का फैसला हो जाए। अब आप लोग पूछिए।
There we heard from Uma Bharti, and this is actually very, very important, where many are now seeing this verdict, what we heard from the court today, to set a precedent for other similar cases and disputed sites as well. Let me bring in my guests as well. We have Advocate Mohit Paul. We also have Maulana Kazmi, a Muslim scholar. Good to have both of you on the broadcast with us. Maulana ji, let me begin with you. One of the fundamental arguments by the Muslim side so far had been that this entire plea and case is in violation of the Places of Worship Act. But today, with this plea being admitted in the court, essentially what this means is that Places of Worship Act is no more a hurdle as far as this case is concerned. Ridhima, first of all, I would like to appeal to the Muslim brothers and other brothers not to take law and order into their own hands. We are the country governed by law. So whatever the court order is there, we are, yes, it's obvious that we are disappointed, Muslim and the Masjid side is disappointed, but we have option to go the higher court, High Court and Supreme Court, saying that the maintainability, it is maintainable, it is not proper, it's wrong, because the Places of Worship Act 1991 was passed in the spirit to protect the further issues of Hindu-Muslim on the name of the Astha, to stop graving the land on the name, graving the places of worship on the name of religion. That is why. Maulana ji, one second. Before I come back, one sec. Maulana ji, I want a slight clarification. Before I come back to you to understand that what are now going to be the arguments by the Muslim side, considering the fact the Places of Worship Act is no more a hurdle or a barrier as far as this case is concerned, do you think there has been possibly a lack of understanding of what the case was today? Because today, the entire case was just about the maintainability of the plea as far as the plea of the 5 Hindu women who wanted a right to pray at Ma Shringar Gauri, not just once a year, but every single day. So as far as the religious character of a place is concerned, that wasn't even part of the discussion today. Under the POW Act, even the altercation, even the changing, slight changing in the character and nature of any places of worship is illegal and violation of the Act. That is why in Ayodhya issue, that point of time, Parliament, when this act was made, specifically Ayodhya issue was exempted specifically so that people should not misunderstand that. And the Ayodhya issue was issue against. No, that's a separate case. That exemption was already created. One sec, Maulani ji. That exemption was already in place by the time this legal hearing and case started. Mohit Paul, what I'm essentially trying to understand, since the fundamental argument by the Muslim side had been that this is in violation of the Places of Worship Act, with the plea being admitted in the court, we now understand that Places of Worship Act is no more a barrier. What is the possible argument then going forward by the Muslim side? No, see, so what they're going to do is, in which I think the lawyer also said when you asked him for his comments, that they will go in appeal. So they're obviously not giving it up. This is only at the first rung that it has been decided that the suit is maintainable. But they have an option of going to the High Court, and even then, if whichever side loses, they have an option of going to the Supreme Court. So this, as you were also rightly saying, this is just the beginning of the battle. One step done, that with the trial court, which is actually hearing the case prima facie in the first instance, it has held that this suit is maintainable. So that is something which is taken care of. Now it depends on the other side, although I think the honorable judge has kept the matter on 22nd of September. So if the defendants, they are aggrieved by this judgment, they will have to approach the High Court in the next 10 days and seek a stay from there for the trial court to proceed for the further hearing of this case. So their argument that this case is barred by law will continue till the time they get actually, till the time either they succeed or there's a final approval from the Supreme Court saying that no, the suit is maintainable. Okay. I'll just request both my guests to stay on with us. I'll request my colleagues to stay on with us. A lot of other fascinating details to discuss as well. We're slipping into a very short break, coming back with lots more.
not something that is the figment of my imagination. These are real issues facing the Congress party. Just because somebody talks about it doesn't mean that you'll start hurting their personal and professional credibility. This is the problem in our system. In our system, you can catch the individual, you can't get the money back. And that's what individuals and entities, political parties, etc. are making use of. Can you today, with a degree of certainty, say that Mr. Gandhi is going to contest to be the next president of the Congress party? Because if he is not, then all that he is doing is taking away attention from whoever the next president of the Congress party is going to be. The easiest solution that the BBMP has taken so far is destroy the slums, but the builders, they have been given a free run. The political class is appearing to be subservient to the money power of the builder mafia. जिसके पास मेडिकल कॉलेजेस है, जिसके पास बेस्ट ऑफ द सुविधाएं है, सारी हेल्थ की सारी सुविधाएं है, बावजूद उसके आप पेशेंट में नंबर 1 हो, आप मौत में नंबर 1 हो और आंकड़े छिपाकर भी नंबर 1 हो। जब आंकड़े निकलते हैं तो ध्यान में आता है कि आपने आधे आंकड़े तो छिपा दिए। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि जिसके पास इतने रिसोर्सेस है वो अगर इस प्रकार से परफॉर्म करता है तो इसके लिए हम उसको शाबाशी दे या उसको प्रश्न पूछे। सवाल इतना ही है कि सारे कोविड के दरमियान सरकार फेसबुक लाइव थी और पब्लिक डेड थी। इससे ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहता। 80,000 करोड़ का डिपॉजिट आपने कहा। आशीष शेलार जी भी यहाँ हैं, नमस्ते। बहुत सारे परिचित दिख रहे हैं। मुंबई नगरी आते हैं तो सब हर जगह दोस्त ही मिलते हैं। बट देवेंद्र जी, आई वांट टू आस्क यू, 80,000 करोड़ का डिपॉजिट आपने बताया, तो मुंबई शंघाई बन सकती है? मुंबई को शंघाई क्यों बनाए? मुंबई मुंबई है, मुंबई का अपना एक कल्चर है, मुंबई की एक अपनी अलग प्रकार की रचना है। मुंबई को मुंबई ही बनाएंगे और शंघाई से अच्छा बनाएंगे और वो बनाया जा सकता है। ये मुंबई शंघाई वाली बात भी इन्होंने ही कही थी, अब मुंबई मुंबई वाली बात भी यही कह रहे हैं। नहीं जी, मुंबई शंघाई वाले हमारे पीछे वाले कह गए थे जिन्होंने मुंबई में एक भी प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया। अब एक और बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये युति टूटी कैसे? ऐसा है कि जब एस्पिरेशंस ये क्षमता के बाहर निकल जाते हैं, देखिए हर व्यक्ति की एक क्षमता होती है, लेकिन अपनी क्षमता से ज़्यादा कई बार उसके एस्पिरेशंस हो जाते हैं। तो ऐसे समय आदमी फैसले करता है। तो हम तो अलायंस में लड़े और जिस समय अलायंस में लड़े हर सभा में, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो या गृह मंत्री जी हो, हमारे अध्यक्ष जी हो, सबने ये कहा कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में लड़ रहे, बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। तब स्टेज पर उद्धव जी थे, वो भी ताली बजाते थे। उन्होंने भी कई बार कहा मेरे नेतृत्व में चल रहा है। अब बाद में रिजल्ट आने के बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ, तो इसलिए मैंने कहा कि क्षमता से बड़ा एस्पिरेशन हो गया, क्योंकि उनके तो चुनकर आए थे 56, हमारे चुनकर आए थे 105। हम जितनी सीटें लड़े उसमें हमारे 70% चुनकर आए, वो जितनी सीटें लड़े उसमें 42% चुनकर आए। तो इसका सीधा मतलब ये था कि हमारे कारण उनको मैंडेट मिला था, मोदी जी के चेहरे के कारण उनको मैंडेट मिला था। लेकिन उस मैंडेट को नकार कर मुख्यमंत्री बनने की एस्पिरेशन के कारण उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाना ठीक माना, तो युति टूट गई। देवेंद्र जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, 5 ट्रिलियन का ख्वाब है, दैट जाका ऑल्सो मेंशन। एक स्टेट ने तो कह दिया 1 ट्रिलियन, महाराष्ट्र कितना कर सकता है? 1 ट्रिलियन कहने वाला पहला स्टेट महाराष्ट्र था और 1 ट्रिलियन पहुंचने वाला भी पहला स्टेट महाराष्ट्र होगा। अब इसी से जुड़ा दूसरा सवाल, 5 साल के आपके कार्यकाल में आपने बहुत कुछ किया, वाटर कंजर्वेशन को लेकर किया, क्राइसिस मैनेजमेंट किया, डेवलपमेंट के लिए किया, मेट्रो का काम, कोस्टल रोड मुंबई में काम। उसके बाद जो हुआ तो उसमें महाराष्ट्र आगे बढ़ा है कि पीछे आ गया है?
आपका रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है पिछले 2.5 साल का? देखिए, ऐसा है कि पिछले 2.5 साल के बारे में आपने पूछा, तो मैं इतना ही कहूँगा कि 2.5 साल में क्या हुआ, ऐसा अगर किसी भी आम नागरिक को हम पूछे तो उसको पता ही नहीं है क्या हुआ। क्योंकि जो प्रोजेक्ट्स हमने महाराष्ट्र में शुरू किए थे उनमें से कुछ को बंद कर दिया गया, बाकी कुछ चल रहे हैं। एक भी नया प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ महाराष्ट्र में। हाँ, एक बात ज़रूर हुई और मैं बड़े दुख के साथ कहता हूँ कि महाराष्ट्र का एडमिनिस्ट्रेशन ये बहुत सटीक माना जाता था, और विशेष रूप से महाराष्ट्र की जो पुलिस है और मुंबई की पुलिस है, इसका देश और दुनिया में बोलबाला था। किंतु जिस प्रकार से घटनाएं महाराष्ट्र की पुलिस में घटी और होम मिनिस्टर को जेल जाना पड़ा, और जिस प्रकार से ट्रांसफ़र पोस्टिंग का स्कैम हुआ, इससे निश्चित महाराष्ट्र के पुलिस की प्रतिमा पर एक दाग लगा है। और मैं ऐसा मानता हूं कि देखिए, दाग लगाने We have got the order out of the Varanasi court. This seems to be a big win for the Hindu side as the हमारे सारे आर्गुमेंट्स को मान लिया है। मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की उनकी जो प्ली थी उसको खारिज कर दिया है। वक्फ एक्ट की प्ली को खारिज कर दिया है। देखिए, आपने सुना कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि कोर्ट ने हिंदू पथ की दलील को मान लिया है। हमारी यही है कि आज घर घर दीपक जले, थाली बजे, शंख जले। इसमें हिंदू समाज की तरफ जीत हुई है, हिंदू समाज साधन धर्मियों की जीत हुई है। Welcome back. Thanks a lot for staying with us. We continue to track the big story coming in from Varanasi, where there has been a big win for the Hindu side. Their plea has been admitted. It's maintainable. Remember, this was a plea by 5 Hindu women as far as the right to worship at Ma Shringar Gauri was concerned. Our guests continue to be with us. Advocate on record Supreme Court Mohit Paul, and we also have a Muslim scholar Maulana Kazmi. Mohit, let me come to you first. Now that the plea is maintainable, let's talk about what we can expect in days to come. The tussle as far as the original character of this structure is concerned, that is what we're going to see play out in days or possibly weeks to come. Then in that backdrop, how crucial is it going to be, the submissions and the report of the Advocate Commissioner? Well, that will definitely be quite relevant, actually, and that's the reason why the Advocate Commissioner was also appointed. But it all, to be very honest, I think you're quite optimistic about the fact that the case will go at a breakneck speed. I don't think that's going to happen because the defendants are going to go in appeal, and then it's going to reach Supreme Court also either way. So I think for the moment, the focus may shift from Kashi to Allahabad High Court. Okay. Maulana ji, I also want to understand from you, because the Hindu side is saying this is a step in the right direction. They're seeing this as a win already. Do you then think what we've heard from the court today will now become a precedent in other similar disputed cases as well? We think that country should not be misled on the name of Hindu Muslim, on the name of Mandir Masjid. The country has a lot of there's some cross connection going issues of development, issues of healthcare, issues of education. So we only hope, and the High Court and Supreme Court will consider places of worship Act 1991. That is the mainstream, and this is the main instrumental design to protect the country's secular character. Otherwise, there will be a floodgate of litigation against thousands of mandirs. But Maulana ji, what you are speaking about is a very idealistic world. If that was the case, then we wouldn't have seen this even reach the courts. Then you would have just had representatives from both sides try to sort it out outside court. But considering the fact we're already seeing a legal tussle, I wanted to understand where do we see this headed. I'll request my guests to stay on with us. Let's listen in to some reactions as well. कितना बड़ा दिन है और कितना बड़ा फैसला आप इसे मानते हैं? सोमवार है,
पितृपक्ष चल रहा है और उसमें यह आया हुआ फैसला न्याय की तरफ बढ़ा पहला कदम अवश्य है, लेकिन हम कहें कि यह मील का पत्थर है जहां से हमें विजय दिख रही है, क्योंकि अब चर्चा प्रारंभ होगी। अभी तक था कि यह मुकदमा सुनने योग्य है अथवा नहीं है। मुकदमा सुनने योग्य है, यह तय हो गया। मंदिर के सबूत, गुंबद के नीचे दबा हुआ वह शिखर, गुंबद और शिखर के बीच के 3.5 फीट चौड़े गलियारे की चर्चा, दीवारों पर उत्कीर्ण मूर्तियों की चर्चा और उस शिवलिंग को जो फव्वारा बताने की असफल कोशिश थी, इस पर चर्चा, और फिर शिवलिंग और मां श्रृंगार गौरी के पूजन के अधिकार, इन सारी बातों पे बहस का दौर तो देश में अब प्रारंभ होगा, कोर्ट में अब प्रारंभ होगा और हमें पूर्ण विश्वास है हम विजयी होंगे। जो राइट टू वर्शिप का ये जो प्रे है, इट इज नॉट बार्ड बाय द 1991 एक्ट। इस आर्गुमेंट पर आपका क्या कहना है, इस ऑब्जर्वेशन पर? अभी तो हम जब तक उस पर कोर्ट ने जो कहा है अब उसको हम भी पढ़ लेंगे, तो उसका हम लोग राय करेंगे। राय करने के बाद हाईकोर्ट में जाएंगे, हाईकोर्ट में वहाँ वकील से मशवरा करेंगे कि इस पॉइंट को हम लोग वहाँ हाईकोर्ट में रखेंगे। जिला जज, सुप्रीम कोर्ट ने जिला जज को डायरेक्शन दिया, उनके डायरेक्शन के मुताबिक जिला जज ने हमारे दोनों पक्षों की बात सुनी, बात सुनने के बाद एक आर्डर किया। अब इसकी रिपोर्ट वो वहाँ भेजेंगे सुप्रीम कोर्ट। हमारा आर्डर सही नहीं कि जब तब तक आर्डर नहीं पढ़ लेंगे तब तो हम कैसे बता दें कि क्या कमी रह गई और कोर्ट ने उस कमी को कहाँ छोड़ दिया, कहाँ और लुक कर दिया। पूजा के अधिकार के, ठीक है, पूजा का अधिकार तो आपका कभी हुआ ही नहीं। आप कहते हैं कि बराबर 93 तक होता रहा, 93 में भी नहीं था। साल में एक बार होता था पूजा, वो आज भी हो रहा है। एक बार साल में होता था चैत में, वो आज भी हो रहा है। So there you heard from the lawyers and the legal team of the Muslim side, disappointed with what's happened today. They will approach a higher court. Next date of hearing in this case is the 22nd of September. On this note, I'd like to thank my colleagues and guests as well. We'll keep tracking all these developments and much more. For now, slipping into a very short break. बंद कर दिया गया, बाकी कुछ चल रहे हैं। एक भी नया प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ महाराष्ट्र में। हाँ, एक बात ज़रूर हुई और मैं बड़े दुख के साथ कहता हूँ कि महाराष्ट्र का एडमिनिस्ट्रेशन ये बहुत सटीक माना जाता था और विशेष रूप से महाराष्ट्र की जो पुलिस है और मुंबई की पुलिस है, इसका देश और दुनिया में बोलबाला था। किंतु जिस प्रकार से घटनाएं महाराष्ट्र की पुलिस में घटी और होम मिनिस्टर को जेल जाना पड़ा और जिस प्रकार से ट्रांसफ़र पोस्टिंग का स्कैम हुआ, इससे निश्चित महाराष्ट्र के पुलिस की प्रतिमा पर एक दाग लगा है। और मैं ऐसा मानता हूं कि देखिए, दाग लगाने को तो 1 साल लगता है पर दाग मिटाने को कई साल लगते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिवली हम लोग पीछे गए, न कोई नया निवेश आया, न कोई गति बढ़ी। तो कुल मिलाकर मैं ऐसा कहूँगा कि पिछले 2.5 साल में जो सरकार थी वो सरकार अपनी कोई अचीवमेंट बता नहीं सकती है। बोलने को तो 4 चीज़ें वो बोलेंगे, पर एक भी ऐसी चीज़ जो महाराष्ट्र को आगे ले जा पाए ऐसी उस सरकार में नहीं हुई। केवल भ्रष्टाचार और महिमा मंडन खुद का, इससे ज़्यादा वो सरकार कुछ नहीं कर पाई। मुंबई पुलिस कमिश्नर बैठे हैं, सो द टास्क इज कट आउट फॉर यू सर। पर कल गणपति विसर्जन में आपने कहा नो होल्ड्स बार्ड, और इतना बढ़िया विसर्जन हुआ है तो उसके लिए तो कहीं ना कहीं आपको लगता है थोड़ा तो देखिए, आवर फोर्स इज वन ऑफ द बेस्ट फोर्स इन द कंट्री। और मैंने 5 साल में गृह मंत्री इससे पहले रहा हूं और मुझे मेरे फोर्स पर फक्र है। इसलिए जब मैं वो परिस्थिति देखता था, और उसके लिए हम पुलिस को ब्लेम नहीं कर सकते। जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी वो अगर पैसे ले के अनडिजर्विंग लोगों को पोस्टिंग देगी, सारे अनडिजर्विंग थे ऐसा नहीं कहता हूँ,
पर कई की पोस्ट पर अनडिजर्विंग लोग जब लाए गए और जब वसूली के टारगेट दिए गए 100 करोड़ रुपया वसूल करके लाना है तो क्या होगा। और अब मैं मानता हूं कि यही पुलिस है जो आने वाले दिनों में आपको बेहतर परफॉर्म करते हुए दिखेगी। अच्छा, लेकिन ये कहा जाता है कि मुंबई मॉडल कोविड मैनेजमेंट की पिछली सरकार में कोविड बहुत अच्छे से किया गया था, मैनेज किया गया था। डू यू एग्री, डिसएग्री? कोविड अच्छे से मैनेज हुआ कि नहीं पता नहीं, पर कुछ इंटरनेशनल अखबारों में न्यूज़ अच्छे से मैनेज हुई, वो मैंने देखा। और ये भी मैंने देखा कि जिसने कोविड के मैनेजमेंट पर प्रश्न पूछा उनको जेल भी जाना पड़ा। ऐसे कई मेरे जर्नलिस्ट पत्रकार मित्र हैं कि जो जेल में जाते हुए हमने देखे। देखिए, मेरा सवाल इतना ही है, यू हैव अ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन with 80,000 crore rupees deposit in the bank, जिसके पास मेडिकल कॉलेजेस है, जिसके पास बेस्ट ऑफ द सुविधाएं है, सारी हेल्थ की सारी सुविधाएं है, बावजूद उसके आप पेशेंट में नंबर 1 हो, आप मौत में नंबर 1 हो और आंकड़े छिपाकर भी नंबर 1 हो। जब आंकड़े निकलते हैं तो ध्यान में आता है कि आपने आधे आंकड़े तो छिपा दिए। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि जिसके पास इतने रिसोर्सेस है वो अगर इस प्रकार से परफॉर्म करता है तो इसके लिए हम उसको शाबाशी दे या उसको प्रश्न पूछे। सवाल इतना ही है कि ये सारे कोविड के दरमियान Welcome back. Thanks a lot for staying with us. Some big update coming in. We're understanding the Central Bureau of Investigation, the CBI, has officially taken over the murder case of Sonali Phogat. Remember, this after the Goa government had recommended an investigation by the CBI. Earlier in the day, we'd heard from the Goa Chief Minister that the state government will be recommending a CBI investigation. We'd also heard from the Goa Chief Minister that he personally will be speaking to the Home Minister as well for the CBI to officially take over the case of the murder of Sonali Phogat. This is also interesting and important because even the family of Sonali Phogat from day one had been asking exactly this, because they were suspecting that there was a larger foul play in place. My colleague Anshul is now joining us on the broadcast. Anshul, this is something that we were discussing earlier in the day as well. We had heard from the Goa Chief Minister that a CBI takeover or a CBI looking into this case is very, very crucial. What does this then mean for the investigation of the case? So yes, the demand that has been coming from day one, as you rightly mentioned, the demand that the family members have already been saying that they wanted a CBI probe. Now, finally, after the recommendation of the Goa Chief Minister, the CBI has now officially taken over the case. All the case files will now be transferred to the CBI. In fact, in the next few days, what we are expecting is that the custody of both these accused, Sudhir Sangwan and Sukhvinder Singh, will be handed over to the CBI, where they will be interrogated now by the CBI. Now, the scope of investigation will also increase since the matter has now come under the CBI. We can see this, the CBI officers in the coming days going to Goa as well as Hisar to investigate the entire scenario and actually form a timeline as to how did Sonali Phogat actually initially reach Goa and after which she was drugged. So if there was actually a planning behind this, all this would now be investigated by the CBI. However, whatever the Goa police has managed to investigate till now, they haven't still been able to establish the exact motive behind this. So yes, it is also going to be a big task for the CBI to actually find out the motive behind the alleged killing of Sonali Phogat. So yes, it remains to be seen if CBI will also find that out, or will CBI also come out and say that this is a case of drug overdose and there is no linkage or motive that could be found behind the allegations that have been put by the family. And it's not just the motive, but also a lot of criticism against the Goa police because they had seen this as an open and shut case of cardiac arrest. Anshul, thanks a lot for getting us all those details. Shifting our focus to some other breaking developments coming in. The Economic Offences Wing of the Delhi Police has now issued a third summon to Bollywood actor Jacqueline Fernandes to appear on the 14th of September. This is in connection to Sukesh Chandrasekhar's scam probe. Earlier, remember, the actor had failed to appear before the Delhi Police on the 29th of August and the 12th of September. So what we're now understanding is
the Economic Offences Wing of the Delhi Police has now issued a third summon to actress Jacqueline Fernandes to appear on the 14th of September in connection to conman Sukesh Chandrasekhar's scam probe. Remember, there has also been a crucial update where we've seen Jacqueline Fernandes, who was earlier a witness in the case, now being named as an accused, because the allegation against her by the Enforcement Directorate has been that she's been a recipient as far as proceeds of crime are concerned. All these gifts that she had received from Sukesh Chandrasekhar, she knew where and how it was coming from. This included luxury cars, it included some horses, a Persian cat as well. Remember, earlier Jacqueline Fernandes had denied all these allegations against her. She had also denied knowing Sukesh Chandrasekhar. She had also said that she did not know the real identity of Sukesh Chandrasekhar. So now what we're understanding in the backdrop of the investigation that still continues, the Economic Offences Wing of Delhi Police has now issued a third summon. My colleague Anvit is joining us with more details. Anvit, what does this now mean? What if Jacqueline Fernandes does not appear this time around as well? Yeah, see, it was late last night that senior officials of Delhi Police had confirmed to CNN News 18 that Jacqueline will not be appearing this time. Police had been informed by Jacqueline's counsels that she will not be able to come, and therefore the actress had requested a third date. Now, it was on 29th of August when she was summoned by the Delhi Police's Economic Offences Wing, after which she expressed it before the Delhi Police that she will not be able to come because of her schedule. After that, 12th of September was the second date that was given to her, and she did not even appear today. So now 14th is the date that she has been given. She is expected to arrive at around 11 a.m. at the Mandir Marg office of Economic Offences Wing, which has been probing this entire case since the beginning. And just to remind, it was Economic Offences Wing's FIR based on which ED had registered a case and then had this entire controversy that started from jail. It is being investigated by ED also. Both ED and Delhi Police have submitted charge sheets in this. Earlier, it is also important to mention that Noora Fateh, whose name has also come in this case because she had also allegedly received some gifts from the proceeds of crime which Sukesh Chandrasekhar had collected when he was lodged in Rohini jail from Aditi Singh, Shivendra Singh's wife, who is also lodged in jail. It was being alleged that Sukesh had used names like of officers, senior officers and bureaucrats from the Law Ministry and Home Ministry to extort the total amount of 215 crore. And both Delhi Police and ED have filed charge sheets in this case. Noora Fateh was also earlier questioned. She has also been informed that she will be called again, and she was earlier on September 2, she was questioned for at least 7 to 8 hours. Now, Jacqueline is also expected to be questioned by Economic Offences Wing for a similar amount of time. She will be given a questionnaire. What we have learned from Delhi Police sources is that she will be given a questionnaire which has more than 50 questions. Mostly these questions are based on what were her links with Sukesh, whether or not she was in touch with Sukesh at the time when he was in jail and he had been allegedly extorting all this money from Aditi Singh. So these are the lines on which Jacqueline is expected to be questioned, but only if she appears this time as well. Correct. Anvit, I'll just request you to stay on with us. Our colleague Ananya Bhatnagar also now joining us on the broadcast. Ananya, as I said, trouble is only mounting for Jacqueline Fernandes. What if she doesn't appear this time around as well? She's already been named as an accused. You spoke to the legal team of Jacqueline a short while ago. What is the legal team of Jacqueline Fernandes maintaining? Oh, yes, on the September 12th, Jacqueline Fernandes was summoned by the Delhi Police EOW, the Economic Offences Wing of the Delhi Police, which is investigating the predicate offence in this particular case with regards to the alleged anomalies and the money laundering that Sukesh Chandrasekhar had done and how Jacqueline had actually enjoyed these proceeds of crime. We spoke to the legal team of Jacqueline Fernandes on September 12th and today as well, but today we could not get a response from them. But then on 12th of September, when she had to appear, she could not because of her professional commitments, and that was the same was conveyed before the Economic Offences Wing, following which a fresh date of summons have been given out by the EOW saying that she can appear before the court, in fact the EOW on September 14. And we also have to remember that she already has to appear before the Delhi's Patiala House Court in the ED matter on September 26. So in fact, just like the last time when the matter was being heard, when the charge sheets were taken cognizance of and the summons were issued against Jacqueline Fernandes in the ED matter, the Delhi Police also had informed the court that she was summoned but did not appear. And if at all on September 14, if Jacqueline does not appear before the EOW, we might see that the Delhi Police moves in for a cognitive action against Jacqueline Fernandes. And when Jacqueline comes up on September 26th, we might see some kind of a submission being made from the end of the Delhi Police that she is not appearing or she is evading these summons
though she's citing professional commitments as a ground for these adjournments or skipping these summons. So, but we'll have to wait and watch as to what the Delhi police tells the court, or whether or not it approaches for a bailable warrant to be issued against Jacqueline Fernandes into this particular case. Because remember that in this first a bailable warrant can be sought, and then only a non-bailable warrant. So a lot will also depend on the actor appearing or not appearing as far as the economic offences wing and the summon that they've issued now for a third time. Anvit and Anina, thanks a lot for getting us all those details. We're slipping into a very short break, coming back with lots more. हर सभा में, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो या गृह मंत्री जी हो, हमारे अध्यक्ष जी हो, सबने ये कहा कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में लड़ रहे बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। तब स्टेज पर उद्धव जी थे, वो भी ताली बजाते थे। उन्होंने भी कई बार कहा मेरे नेतृत्व में चल रहा है। अब बाद में रिजल्ट आने के बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ, तो इसलिए मैंने कहा कि क्षमता से बड़ा एस्पिरेशन हो गया, क्योंकि उनके तो चुनकर आए थे 56, हमारे चुनकर आए थे 105। हम जितनी सीटें लड़े उसमें हमारे 70% चुनकर आए, वो जितनी सीटें लड़े उसमें 42% चुनकर आए। तो इसका सीधा मतलब ये था कि हमारे कारण उनको मैंडेट मिला था, मोदी जी के चेहरे के कारण उनको मैंडेट मिला था। लेकिन उस मैंडेट को नकार कर मुख्यमंत्री बनने की एस्पिरेशन के कारण उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाना ठीक माना, तो युति टूट गई। देवेंद्र जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, 5 ट्रिलियन का ख्वाब है, दैट जाका ऑल्सो मेंशन। एक स्टेट ने तो कह दिया 1 ट्रिलियन, महाराष्ट्र कितना कर सकता है? 1 ट्रिलियन कहने वाला पहला स्टेट महाराष्ट्र था, और 1 ट्रिलियन पहुंचने वाला भी पहला स्टेट महाराष्ट्र होगा। अब इसी से जुड़ा दूसरा सवाल, 5 साल के आपके कार्यकाल में आपने बहुत कुछ किया, वाटर कंजर्वेशन को लेकर किया, क्राइसिस मैनेजमेंट किया, डेवलपमेंट के लिए किया, मेट्रो का काम, कोस्टल रोड मुंबई में काम। उसके बाद जो हुआ तो उसमें महाराष्ट्र आगे बढ़ा है कि पीछे आ गया है? आपका रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है पिछले 2.5 साल का? देखिए, ऐसा है कि पिछले 2.5 साल के बारे में आपने पूछा, तो मैं इतना ही कहूँगा कि 2.5 साल में क्या हुआ, ऐसा अगर किसी भी आम नागरिक को हम पूछे तो उसको पता ही नहीं है क्या हुआ। क्योंकि जो प्रोजेक्ट्स हमने महाराष्ट्र में शुरू किए थे उनमें से कुछ को बंद कर दिया गया, बाकी कुछ चल रहे हैं। एक भी नया प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ महाराष्ट्र में। हाँ, एक बात ज़रूर हुई, और मैं बड़े दुख के साथ कहता हूँ कि महाराष्ट्र का एडमिनिस्ट्रेशन ये बहुत सटीक माना जाता था, और विशेष रूप से महाराष्ट्र की जो पुलिस है और मुंबई की पुलिस है, इसका देश और दुनिया में बोलबाला था। किंतु जिस प्रकार से घटनाएं महाराष्ट्र की पुलिस में घटी और होम मिनिस्टर को जेल जाना पड़ा, और जिस प्रकार से ट्रांसफ़र पोस्टिंग का स्कैम हुआ, इससे निश्चित महाराष्ट्र के पुलिस की प्रतिमा पर एक दाग लगा है। और मैं ऐसा मानता हूं कि देखिए, दाग लगाने को तो 1 साल लगता है, पर दाग मिटाने को कई साल लगते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिवली हम लोग पीछे गए, न कोई नया निवेश आया, न कोई गति बढ़ी। तो कुल मिलाकर मैं ऐसा कहूँगा कि पिछले 2.5 साल में जो सरकार थी, वो सरकार अपनी कोई अचीवमेंट बता नहीं सकती है। बोलने को तो 4 चीज़ें वो बोलेंगे, पर एक भी ऐसी चीज़ जो महाराष्ट्र को आगे ले जा पाए, ऐसी उस सरकार में नहीं हुई। केवल भ्रष्टाचार और महिमा मंडन खुद का, इससे ज़्यादा वो सरकार कुछ नहीं कर पाई। मुंबई पुलिस कमिश्नर बैठे हैं, सो द टास्क इज कट आउट फॉर यू सर। पर कल गणपति विसर्जन में आपने कहा नो होल्ड्स बार्ड, और इतना बढ़िया विसर्जन हुआ है, तो उसके लिए तो कहीं ना कहीं आपको लगता है थोड़ा तो देखिए, आवर फोर्स इज वन ऑफ द बेस्ट फोर्स इन द कंट्री। और मैंने 5 साल में गृह मंत्री इससे पहले रहा हूं, और मुझे मेरे फोर्स पर फक्र है। इसलिए जब मैं वो परिस्थिति देखता था, और उसके लिए हम पुलिस को ब्लेम नहीं कर सकते। जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी, वो अगर पैसे ले के अनडिजर्विंग लोगों को पोस्टिंग देगी, सारे अनडिजर्विंग थे ऐसा नहीं कहता हूँ,
पर कई की पोस्ट पर अनडिजर्विंग लोग जब लाए गए और जब वसूली के टारगेट दिए गए 100 करोड़ रुपया वसूल करके लाना है तो क्या होगा। और अब मैं मानता हूं कि यही पुलिस है जो आने वाले दिनों में आपको बेहतर परफॉर्म करते हुए दिखेगी। अच्छा, लेकिन ये कहा जाता है कि मुंबई मॉडल कोविड मैनेजमेंट की पिछली सरकार में कोविड बहुत अच्छे से किया गया था, मैनेज किया गया था। डू यू एग्री, डिसएग्री? कोविड अच्छे से मैनेज हुआ कि नहीं पता नहीं, पर कुछ इंटरनेशनल अखबारों में न्यूज़ अच्छे से मैनेज हुई, वो मैंने देखा। और ये भी मैंने देखा कि जिसने कोविड के मैनेजमेंट पर प्रश्न पूछा उनको जेल भी जाना पड़ा। ऐसे कई मेरे जर्नलिस्ट पत्रकार मित्र हैं कि जो जेल में जाते हुए हमने देखे। देखिए, मेरा सवाल इतना ही है, यू हैव अ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन विथ 80,000 करोड़ रुपीस डिपॉजिट इन द बैंक, जिसके पास मेडिकल कॉलेजेस है, जिसके पास बेस्ट ऑफ द सुविधाएं है, सारी हेल्थ की सारी सुविधाएं है। Congress leadership issues is not something that is the figment of my imagination. These are real issues facing the Congress party. Just because somebody talks about it doesn't mean that you'll start hurting their personal and professional credibility. This is the problem in our system. In our system, you can catch the individual, you can't get the money back. And that's what individuals and entities, political parties, etc. are making use of. Can you today with a degree of certainty say that Mr. Gandhi is going to contest to be the next president of the Congress party? Because if he is not, then all that he is doing is taking away attention from whoever the next president of the Congress party is going to be. The easiest solution that the BBMP has taken so far is destroy the slums, but the builders, they have been given a free run. The political class is appearing to be subservient to the money power of the builder mafia. ऐसा है कि जब एस्पिरेशंस ये क्षमता के बाहर निकल जाते हैं, देखिए हर व्यक्ति की एक क्षमता होती है, लेकिन अपनी क्षमता से ज़्यादा कई बार उसके एस्पिरेशंस हो जाते हैं। तो ऐसे समय आदमी फैसले करता है। तो हम तो अलायंस में लड़े, और जिस समय अलायंस में लड़े, हर सभा में, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो या गृह मंत्री जी हो, हमारे अध्यक्ष जी हो, सबने ये कहा कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में लड़ रहे, बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। तब स्टेज पर उद्धव जी थे, वो भी ताली बजाते थे। उन्होंने भी कई बार कहा मेरे नेतृत्व में चल रहा है। अब बाद में रिजल्ट आने के बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ, तो इसलिए मैंने कहा कि क्षमता से बड़ा एस्पिरेशन हो गया, क्योंकि उनके तो चुनकर आए थे 56, हमारे चुनकर आए थे 105। हम जितनी सीटें लड़े उसमें हमारे 70% चुनकर आए, वो जितनी सीटें लड़े उसमें 42% चुनकर आए। तो इसका सीधा मतलब ये था कि हमारे कारण उनको मैंडेट मिला था, मोदी जी के चेहरे के कारण उनको मैंडेट मिला था। लेकिन उस मैंडेट को नकार कर मुख्यमंत्री बनने की एस्पिरेशन के कारण उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाना ठीक माना, तो युति टूट गई। देवेंद्र जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, 5 ट्रिलियन का ख्वाब है, दैट जाका ऑल्सो मेंशन। एक स्टेट ने तो कह दिया 1 ट्रिलियन, महाराष्ट्र कितना कर सकता है? 1 ट्रिलियन कहने वाला पहला स्टेट महाराष्ट्र था, और 1 ट्रिलियन पहुंचने वाला भी पहला स्टेट महाराष्ट्र होगा। अब इसी से जुड़ा दूसरा सवाल, 5 साल के आपके कार्यकाल में आपने बहुत कुछ किया, वाटर कंजर्वेशन को लेकर किया, क्राइसिस मैनेजमेंट किया, डेवलपमेंट के लिए किया, मेट्रो का काम, कोस्टल रोड मुंबई में काम। उसके बाद जो हुआ तो उसमें महाराष्ट्र आगे बढ़ा है कि पीछे आ गया है? आपका रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है पिछले 2.5 साल का?
देखिए ऐसा है कि पिछले 2.5 साल के बारे में आपने पूछा, तो मैं इतना ही कहूँगा कि 2.5 साल में क्या हुआ, ऐसा अगर किसी भी आम नागरिक को हम पूछे तो उसको पता ही नहीं है क्या हुआ। क्योंकि जो प्रोजेक्ट्स हमने महाराष्ट्र में शुरू किए थे उनमें से कुछ को बंद कर दिया गया, बाकी कुछ चल रहे हैं। एक भी नया प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ महाराष्ट्र में। हाँ, एक बात ज़रूर हुई और मैं बड़े दुख के साथ कहता हूँ कि महाराष्ट्र का एडमिनिस्ट्रेशन ये बहुत सटीक माना जाता था, और विशेष रूप से महाराष्ट्र की जो पुलिस है और मुंबई की पुलिस है, इसका देश और दुनिया में बोलबाला था। किंतु जिस प्रकार से घटनाएं महाराष्ट्र की पुलिस में घटी और होम मिनिस्टर को जेल जाना पड़ा, और जिस प्रकार से ट्रांसफ़र पोस्टिंग का स्कैम हुआ, इससे निश्चित महाराष्ट्र के पुलिस की प्रतिमा पर एक दाग लगा है। और मैं ऐसा मानता हूं कि देखिए, दाग लगाने को तो 1 साल लगता है, पर दाग मिटाने को कई साल लगते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिवली हम लोग पीछे गए, न कोई नया निवेश आया, न कोई गति बढ़ी। तो कुल मिलाकर मैं ऐसा कहूँगा कि पिछले 2.5 साल में जो सरकार थी वो सरकार अपनी कोई अचीवमेंट बता नहीं सकती है। बोलने को तो 4 चीज़ें वो बोलेंगे, पर एक भी ऐसी चीज़ जो महाराष्ट्र को आगे ले जा पाए ऐसी उस सरकार में नहीं हुई। केवल भ्रष्टाचार और महिमा मंडन खुद का, इससे ज़्यादा वो सरकार कुछ नहीं कर पाई। मुंबई पुलिस कमिश्नर बैठे हैं, सो द टास्क इज कट आउट फॉर यू सर। पर कल गणपति विसर्जन में आपने कहा नो होल्ड्स बार्ड, और इतना बढ़िया विसर्जन हुआ है, तो उसके लिए तो कहीं ना कहीं आपको लगता है थोड़ा तो देखिए, आवर फोर्स इज वन ऑफ द बेस्ट फोर्स इन द कंट्री। और मैंने 5 साल में गृह मंत्री इससे पहले रहा हूं। We have got the order out of the Varanasi court. This seems to be a big win for the Hindu side. हमारे सारे आर्गुमेंट्स को मान लिया है, मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की उनकी जो प्ली थी उसको खारिज कर दिया है, वक्फ एक्ट की प्ली को खारिज कर दिया है। देखिए, आपने सुना कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि कोर्ट ने हिंदू पथ की दलील को मान लिया है। हमारी यही है कि आज घर घर दीपक जले, थाली बजे, शंख जले। इसमें हिंदू समाज की तरफ जीत हुई है, हिंदू समाज सनातन धर्मियों की जीत हुई है। Namaste and welcome to this edition of The Nation at 5. I'm Anand Narsimhan coming to you live from the CNN News 18 newsroom. The story this evening, this Monday evening, comes from Kashi. It is with respect to the Gyanvapi Parisar and the plea that was made by 5 women who entered into this plea and said that they have the right to worship the Shringar Gauri shrine in the Gyanvapi Masjid Parisar on the outer wall of the Gyanvapi Masjid Parisar. In Gyanvapi, there are multiple challenges and multiple claims that have been made with respect to Adi Vishweshwar, that is the Shivling, and of course that entire area that was barricaded. But this plea by 5 ladies stemmed from the fact that there is worship of Ma Shringar Gauri which happens, but it was restricted. And they have come out and said that their right to worship has been impinged upon, and they have claimed their right to worship Ma Shringar Gauri. In this case, in my hand is the 26-page order, which also comes as a big win for the Hindu Paksh, because the maintainability of this plea was challenged, and was challenged by the Waqf Board and the Anjuman Intizamiya, who manage the affairs of the Gyanvapi Masjid. But the court has turned around and in this 26-page order delineated and outlined under various parts, whether it is a Waqf Act, whether it is a 1983 Kashi Vishwanath Act, or whether it's the Places of Worship Act 1991. Under all these aspects, they have turned around and said that the plea is maintainable. And now the onus is on the Hindu Paksh to come out and then present more evidence that indeed the nature, structure, character of the structure there is indeed 1, Hindu or Sanatan, and 2, that there is actually worship which has happened and continued of Ma Shringar Gauri. More importantly, that there is continued worship which happens, but it has now been restricted.
In this very special edition of The Nation at 5, we will break down the entire judgment and try and understand the various aspects of it in detail. The Muslim Paksh has said they will challenge this order as by their right in a higher court, and they will approach the High Court seeking the maintainability. But the matter for hearing at the District Court under the judge has been now posted for the 22nd of September. Before we get down to the nitty-gritties or what are the cruxes, the 10 big takeaways from this 26-page order, let's listen into some of the reactions. सबसे पहला आप वादी थे, आप ही ने सबसे पहले फोटोग्राफ लिया था, आप ही का फोटोग्राफ जमा हुआ यहाँ कोर्ट पर, जिसके बाद कमिश्नर ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया गया था। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले सर्वे के दौरान हमने कहा था कि बाबा मिल गए, और आज इस विजय की घड़ी में पुनः कह रहे हैं कि यह विजय का जो है काशी विश्वनाथ के शिलान्यास का यह बीजारोपण का बीज साबित होगा। आज का विजय उत्सव, विजय का फैसला। कितना बड़ा दिन है और कितना बड़ा फैसला आप इसे मानते हैं? सोमवार है, पितृपक्ष चल रहा है और उसमें यह आया हुआ फैसला न्याय की तरफ बढ़ा पहला कदम अवश्य है, लेकिन हम कहें कि यह मील का पत्थर है जहां से हमें विजय दिख रही है, क्योंकि अब चर्चा प्रारंभ होगी। अभी तक था कि यह मुकदमा सुनने योग्य है अथवा नहीं है। मुकदमा सुनने योग्य है, यह तय हो गया। मंदिर के सबूत, गुंबद के नीचे दबा हुआ वह शिखर, गुंबद और शिखर के बीच के 3.5 फीट चौड़े गलियारे की चर्चा, दीवारों पर उत्कीर्ण मूर्तियों की चर्चा और उस शिवलिंग को जो फव्वारा बताने की असफल कोशिश थी, इस पर चर्चा, और फिर शिवलिंग और मां श्रृंगार गौरी के पूजन के अधिकार, इन सारी बातों पे बहस का दौर तो देश में अब प्रारंभ होगा, कोर्ट में अब प्रारंभ होगा, और हमें पूर्ण विश्वास है हम विजयी होंगे। जो राइट टू वर्शिप का ये जो प्रे है, इट इज नॉट बार्ड बाय द 1991 एक्ट। इस आर्गुमेंट पर आपका क्या कहना है, इस ऑब्जर्वेशन पर? अभी तो हम जब तक उस पर कोर्ट ने जो कहा है अब उसको हम भी पढ़ लेंगे, तो इसका हम लोग राय करेंगे। राय करने के बाद हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में वहाँ वकील से मशवरा करेंगे कि इस पॉइंट को हम लोग वहाँ हाई कोर्ट में रखेंगे। जिला जज, सुप्रीम कोर्ट ने जिला जज को डायरेक्शन दिया, उनके डायरेक्शन के मुताबिक जिला जज ने हम दोनों पक्षों की बात सुनी, बात सुनने के बाद एक आर्डर किया। अब इसकी रिपोर्ट वो वहाँ भेजेंगे सुप्रीम कोर्ट। या हमारा आर्डर सही नहीं कि जब तब तक आर्डर नहीं पढ़ लेंगे तब तो हम कैसे बता दें कि क्या कमी रह गई, और कोर्ट ने उस कमी को कहाँ छोड़ दिया, कहाँ और लुक कर दिया। पूजा के अधिकार के, ठीक है, पूजा का अधिकार तो आपका कभी हुआ ही नहीं। आप कहते हैं कि बराबर 93 तक होता रहा, 93 में भी नहीं था। साल में एक बार होता था पूजा, वो आज भी हो रहा है। एक बार साल में होता था चैत में, वो आज भी हो रहा है। उनको अधिकार है हाई कोर्ट जाने का, और वो इस अधिकार का पूरा उपयोग करने का अधिकार रखते हैं, इसलिए हम उनको इस अधिकार से नहीं रोक सकते। और जब बात अदालत में है तो सबूतों पर लड़ाई होगी, तो फिर सबूत दोनों पक्ष प्रस्तुत करेंगे, या तो बाहर बैठ के समझौता हो जाए। अगर आपने आगे बढ़कर के मुस्लिम समुदाय ने कह दिया कि ये 3 स्थान हिंदुओं के, तो बाकी किसी मस्जिद को क्षति ना पहुंच पावे, इसके लिए हिंदू समाज ही लट्ठे लेके खड़ा हो जाएगा। लेकिन कम से कम थोड़ी सी तो दरिया दिली दिखाइए, उनकी भावनाओं का थोड़ा सम्मान करिए। लेकिन चूंकि वो नरसिंहा राव जी की सरकार थी, उन्होंने नहीं माना, विधेयक में हमारे संशोधन नहीं लिए, तो हमने बायकॉट कर दिया था। मैं अभी भी चाहती हूँ कि वो रास्ता निकले। So let's look at the 10 big takeaways, ladies and gentlemen. The 10 big takeaways from this 26-page judgment. First up, the judgment, and the judge says the suit is not barred by any provision of the Places of Worship Act 1991. Then the judge also says that the foundation has been laid to establish the Hindu character of the property. Says prima facie there is evidence, but the Hindu Paksh now has to come out and embellish that and provide more proof going forward. Deities mentioned existed within the property on and before 15th of August 1947. That's what the Places of Worship Act also underlines. So they said they existed even before that. The Ayodhya case establishes the right to initiate suit to protect the deity. If the deity existed and the religious character was X, then to protect X and the deity there, that right is there as far as the Ayodhya verdict.
That's what they've said. Then, Ayodhya case also establishes a legal personality to idols. Here, although the word idols is mentioned, it is deity, and the deity is a living being. That's what has the rights of a living being. Now, and also is perennial in age, and that we establish at the time when the Pran Pratishtha happens, the definition of the deity is perennial. That's what, the rights are perennial. Destruction does not result in termination of pious purpose. That's another aspect which has been written. Devotees were allowed to freely worship Ma Shringar Gauri till 1993. Now, this is the aspect which is challenged. They said that till 1993, they could go and access the shrine every day. Why has it been restricted to just 2 days in a year thereafter? That's what the devotees had said in their plea. Government of UP in 1993 restricted entry of devotees without a written order. That's what, and plaintiffs are only demanding right to worship Ma Shringar Gauri. That's what the judgment says. This plaint and this plea is purely with respect to Ma Shringar Gauri. The Muslim Paksh alleged that this is like a backdoor entry to try and get into this entire area and claim it as part of the overall Gyanvapi Parishad, and also lay claim that the fact that that is the seat, the area of the Masjid and the Wazu Khana area, and that area is the seat of Baba Vishwanath. Now, the other part is no suit filed for declaration of disputed property as a temple, saying that the plaintiffs are not saying, and they are not coming out and saying that we want this place to be declared a temple. They have said that we worship here and we want the right to worship there. The other part, right to worship is a civil right, and any interference will raise a civil dispute. So these are the points that have been highlighted in this 26-page judgment. Pranshu Mishra is joining us live, and he is in Kashi. Ananya is joining us from Delhi. Before we get into the legal aspect, Pranshu, what's the mood in Kashi? What was the response, reaction? There seemed to be a buzz right since morning, because everybody was hoping for a positive verdict, because they believe that there is maintainability. And the demand is legal because of a precedent. Till 1993, they had open access to Ma Shringar Gauri every day. Well, so, that has been the basic argument, and you rightly said, the court clearly